Hello everyone and welcome to our channel Mathematics Schooling. Hope you all are enjoying our 30 days 30 questions JEE Advanced series. So let us start today's video and see what is the question for today. So the question says prove that. See, now we are going to solve a very beautiful question which involves the use of integration. ठीक है, चलिए देखते हैं. The question is C1 minus 1 plus 1 by 2 into C2 plus 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 into C3 and so on. The last term minus 1 power n minus 1, 1 plus 1 by 2 and so on up to 1 by n Cn is equals to 1 by n. This is the question that we need to prove. हमें क्या prove करना है कि left hand side is equals to right hand side. When you look at any question related to binomial coefficient, you start thinking about the different approaches that we have learned. Like type A approach क्या हम यहाँ पर use कर सकते हैं? नहीं, because each term is not written as a product of two binomial coefficients, so no need to think about type A. What about type B? Frederick-Argos टेक्निक में coefficients AP में होने चाहिए जो नहीं है, तो अब टाइप C बचता है, यानी हमें इसका जनरल टर्म लिखना है, सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व करना है. डिफरेंशियल कैलकुलस विल नॉट हेल्प अस हियर. इंटीग्रल कैलकुलस में भी ये सम कहां से क्रिएट होगा, राइट? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद राइटिंग डाउन इट्स जनरल टर्म, यानी हम स्टार्ट करेंगे इसकी जनरल टर्म से. सो लेट अस राइट डाउन द जनरल टर्म व्हिच इज गोइंग टू बी सिग्मा करके लिख लेते हैं. NCR, R will start from 1. NCR के साथ what do we have? We have minus 1 power R. In fact, R minus 1 I should write because 1 के साथ तो plus sign आ रहा है. Okay, after that what do we have? 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 and so on till 1 by R. C1 है तो 1 पे end हो गया, C2 है तो 1 by 2 पर, CR होगा तो 1 by R तक मुझे टर्म्स को लिखना होगा. तो ये रहा जनरल टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन या फिर एक्सपेंशन. अभी क्या करें, इसे सिंप्लीफाई करना है. अभी सिंप्लीफाई करना है, नहीं क्या कर सकते हो, अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप. तो ये क्वेश्चन आप मार्क करके रख सकते हैं बिकॉज वी आर जस्ट गोइंग टू यूज अ लिटिल डिफरेंट स्टेप हियर. वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इंटीग्रेशन ओवर हियर. कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? मैं इसे लिखूंगी दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा R is from 1 to n. NCR भी ठीक है, minus 1 पर R minus 1 is also fine. But now this expression can be replaced with integral 0 to 1 plus x square up to x power R minus 1 dx, right? Can I replace this parenthesis with this integral form? You can just verify, integrate it and check. We are getting exactly the similar term, right? अच्छा, अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि जहां हम इसे ऐड नहीं कर पा रहे थे ना इंटीग्रल फॉर्म में लिखने के बाद, अब मैं एटलीस्ट इसे ऐड कर सकती हूँ बिकॉज वी आर गेटिंग अ जीपी हियर, यानी कुछ तो कॉम्पैक्ट फॉर्म बनेगी. ठीक है, आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर. अब देखते हैं अगले स्टेप में क्या लिखें. नेक्स्ट स्टेप में ठीक है हम इसे लिख लेते हैं सिग्मा R is from 1 to n. अभी एनसीआर को मैं टच नहीं करूंगी. माइनस 1 पर R minus 1 is also fine. Let us simplify this integral form. 0 to 1 R टर्म्स की जीपी है a into 1 minus R power n upon 1 minus. I am just saying the formula and accordingly I am writing it over here. This is what we have, right? अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? Now I am going to shift this sigma inside the integral sign. शिफ्ट करते हैं. With respect to x आप इंटीग्रेट कर रहे हो, you can write it sigma यहीं रहने दो, sigma R is from, or we can write it like this. देखो इसे लिखेंगे इंटीग्रल 0 to 1 upon 1 minus x as it is. And now see carefully, sigma R is from 1 to n, NCR minus 1 power R minus 1. एक तो ये वाली टर्म आ गई. फिर आता है माइनस sigma R is from 1 to n, NCR minus 1 power R minus 1. Along with that, we also have x power R, right? And then we have dx. And then we have dx over here. ठीक है. Now I'm going to handle these two sigmas individually. क्या हम इसे handle कर सकते हैं? Yes, absolutely. This is nothing but the sum of all binomial coefficient but one with alternate plus minus sign. कौन सी term missing है? C not missing है. कोई बात नहीं, हम उसका sum फिर भी लिख लेंगे. ये है क्या by the way? जब R को 1 लिखा तो this will become C1 minus C2 plus C3 minus C4 and so on up to the last term, right? So minus C naught add and subtract कर देते हैं and we will get the term as 0. यानी ये तो 0 में convert definitely हो जाएगी, बस C naught को adjust करना रह गया. What about this?
This is binomial expansion. Only C0 is missing. Rest of all the terms are there. So I am going to replace each one of them now. इसे लिखा integral 0 to 1. 1 upon 1 minus x. But look at the first term. It is going to become 0 and plus C0. Right? Here also in the second sigma, C0 is missing. It doesn't matter. R को 1 लिखने पर alternate plus minus बन रहे थे. तो मैंने इसे लिख लिया plus. It is the expansion of 1 minus x whole power n. But that C0 wala term is missing. And then we have dx over here. This C0 will be cancelled from this C0. And now look at the question. It has converted to a very simple integral form. It gives me the integral of 1 minus x power n minus 1 dx. Right? अब आप इसे integrate कर सकते हो. So integrated. जब हम इसे integrate करेंगे तो integration क्या आएगा? 1 minus x power n upon n with a negative sign in front. Putting the limit 0 to 1. Upper limit पे it will become 0. Lower limit पे it will become plus 1 upon n. That's it. This is the answer that we have. This is what we wanted to prove in the question. So see in this question what we have done. We also tried using Frederick-Calvo's technique or the type A technique in which two expansions and their product are to be considered. But none of them is working. So we shifted to type C. That means writing down the general term and simplifying it. But यहाँ पे simplify करने वाला जो step था ना, this step is really important. ठीक है, आप इसी step की वजह से आगे पूरे question को easily handle कर पाए हो, right? So thank you for engaging with the question. If you found the question interesting, then please hit the like button. Subscribe for more updates. Stay tuned for the next video. Until then, keep exploring and learning.